Hi guys and welcome to Desi Lifestyle in Europe. This is lesson number 5 on how to drive a car. In this lesson we will go through how to properly turn the car and what happens when you put the indicator on and how you do it. तो शुरू करते हैं. This is the handle for indicator. So if you want to turn right, you have to press the handle up and then you see the arrow which is blinking to the right. अगर आपने राइट साइड पे करना है तो सिंपल आपने जो है इसको ऊपर की तरफ पुश करना है और सामने जो है वो शो कर रहा है कि मेरा ये राइट की तरफ आ चुका है इंडिकेटर. So in the middle position, the indicators are stopped and one up is to the right and one down from the neutral position is to the left. You have 3 indicator lights, one in front, one at the side and one at the back. You see the orange lights are blinking all the way. So now turning to the left. मैंने साइन दे दिया है और अभी मैं लेफ्ट की तरफ बढ़ रही हूँ. Now again turning to the left. अभी मैं अगेन जो है लेफ्ट साइड पे जा रही हूँ तो मैंने जो है इंडिकेटर दे दिया है. The indicators, you can either put them off or it will go automatically in the off position after the turn is over. जो मैंने फिर लेफ्ट साइड पे जाना है तो मैं यहाँ पे साइन दे रही हूँ. As you notice, the indicator stopped by itself after the turn was over. अभी मैं ज़्यादा गैस दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है वो 50 की है. मैंने गैस से पाँव हटा दिया क्योंकि अभी स्पीड जो थोड़ी सी कम करनी है. अभी मैं थोड़ी सी और गैस दे देती हूँ. ये आपने खुद ही बैलेंस करना है. So now you need to adjust the speed. You're slowing down a little bit. ब्रेक पे पाँव. And you switched over to the brake. Back again to the gas in order to adjust with the speed breakers. अभी फिर से गैस है. अभी मैंने लेफ्ट साइड पे जाना है तो मैं फिर से साइन दे रही हूँ लेफ्ट का. खुद ही जो है वो साइन जो है वो चला गया. So it's important to hold it properly with both hands